जी सर, आ रहा है। यस सर। नुदरत भी आ रही है, कोमल है और गजनपुर भी है. They are going to join us. So they have joined now today. अब हम 9 बंदे, बीच में एक ड्रॉप हो गया. कौन ड्रॉप हो गया? Just wait for 4-5 minutes, then we will start. अगर बाकी नहीं आ रहे, so should we start or wait for 4-5 minutes? I think we should wait for 4-5 minutes. यस सर, थोड़ा वेट कर रहे हैं, आ रहे हैं. बस वो जूम ऐप डाउनलोड हो रही है उनकी. So they are in their mobile or they are in एडमिट को. अगर किसी का मोबाइल साथ साथ लैपटॉप के करीब है तो उसको बंद करें. दोनों पे नहीं होना चाहिए, पे आपको इको आ जाएगा. ये भी ज़हन में बात याद रखिएगा. Ghaznfar is going to join us. So Ghaznfar has joined us and now how many? So 9 है. 12. आपके क्लास में कितने बंदे? हेलो सर. अस्सलाम वालेकुम. 12 है सर. 12 10 बंदे. Yes. इंक्लूडिंग मी नाउ दे आर 10. आप लोगों का ग्रुप पे चैट हो रहा है, तो अगर वो ज्वाइन नहीं करे, देन वी शुड स्टार्ट. एंड इफ दे आर कमिंग, सो 1 मिनट 2 मिनट की बात है. अच्छा जी, तो आप जरा थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन कर लें, जब तक वो लोग ज्वाइन कर लें. सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम गजनफर. गजनफर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप कहाँ से हो, आपने क्या किया हुआ है, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? बस 3-4 लाइन्स में. अस्सलाम वालेकुम. गजनफर. Who is going to join us from Galaxy? Yes. गजनफर, अपना इंट्रोडक्शन करें ना यार. I hope all of you are listening me. यस सर, उसका शायद कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू. ठीक है. सो नेक्स्ट मैन, एमल खान ओडी. Sir, I am Amal Khan. I basically belong to District Charsadda, and I have done Doctor of Optometry from Pakistan Institute of Community Ophthalmology, and now I'm pursuing my masters from there in optometry. Shahbaz. Next, who will be the next man? Shahbaz, introduction कर ले. जो इंट्रोडक्शन कर ले, उसके बाद अपना माइक जो है ना, वो म्यूट कर ले, ताकि इको उसमें ना आए. इसलिए कि आप सुन तो रहे, आपकी सिर्फ आवाज वापस नहीं जाएगी, वरना मैं यहाँ से म्यूट करूंगा आप लोगों को.
तो जो बंदा बात करेगा वो अपने आप को पहले अनम्यूट करे, और जब बात खत्म करे इंट्रोडक्शन फिर दोबारा म्यूट करे। शाबाश। असदुल्ला। Okay, sir. Okay, sir. Sir, my name is Asadullah, and I belong to district Mardan. I have done my doctor of optometry from Pakistan Institute of Community Ophthalmology, and now I am doing here. ओके, सो अब मैंने आपको म्यूट किया। सो नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट वन? शाबाश। और हु इज गोइंग टू जॉइन? यस, अंबर प्लीज। कहाँ पे? यू आर फ्रॉम सवाबी, ठीक है जी। नेक्स्ट हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन? शाबाश। Assalamualaikum, sir. I am Komal Ehsan. I'm from Malakand, and I done my BS from PICO, and I'm doing my masters from PICO. मलाकंड डिवीजन। मलाकंड थोड़े घट ज़्यादा है बच्चे, मलाकंड के कम है। दरगे। नेक्स्ट, नुदरत। Assalamualaikum, sir. My name is Nudrat. I belong to Mardan. I have done my graduation from PICO, and now I'm doing my MPhil. Good. Next, Awaz. Who will be the next one to introduce? Sir, I am Hasib Javed. I belong to Haripur. I have completed my BS from Pakistan Institute of Community Ophthalmology. Now I am in MPhil in PICO. Again, doing my MPhil from PICO. MPhil from PICO. Shawaz. Jaldi kare Shawaz. We are waiting just for one person. 12 bande hain, including me. Walaikum salam. Sir, my name is Shafia Batul, and I'm from Haripur, and I've done my BBS from PICO, and now I'm MPhil student. Next, Shawaz. Who will be the next person? आजम पर तो हो गया, असदुल्ला भी हो गया, शाफिया बतूल भी हो गई। OPPO who is this one? Apo. Who is this one? OPPO. इसका कोई मेरा ख्याल में दूसरे का फोन इस्तेमाल कर रहा है। सर हसीब जावेद। हसीब था सर, हो गया। तो किसी का इंट्रोडक्शन तो नहीं रहा? बंदे तो ज्यादा है। और Sir, Assalamualaikum. I'm Kusuma Azhar. I'm from Islamabad, and I have completed my BS from PICO, and now doing MPhil from PICO. Your good name? I am Kusuma Azhar, sir. Okay. Who's our left? Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Sir, I am Insa Habib, and I belong from Kohat. I have done my Bachelor of Vision Sciences from PICO, and now doing MPhil. Okay. खबर नाराजी, आवाज नाराजी. So I think we should start, and since we have been with our introduction, let me introduce myself. And my name is Professor Dr. Nezali, and I'm representing Hampton Medical University as your tutor. I have done my graduation from University of Peshawar, and then did my master in medical education from Haber Medical University, and then PhD from again University of Peshawar, and then diploma in medical education from Medical University. And what you can say, I am at the moment a member of the academic committee of the American College of Clinical Pharmacology, and I'm also a member of the American College of Clinical Pharmacology, general member. And recently I have been nominated for a presidential award from Haber Medical University.
and from the whole KPI I was on the second position, and twice I have secured Best University Teacher Award from Higher Education Commission, and this year I have been nominated as well. So this was my brief introduction, and I have supervised 8 PhDs and 75 MPhil students with 6 master students and 20 BS students. When I belong to, on domicile, I belong to Mardan, but on in reality mean my forefather that belongs to Charsadda. So now it's up to you where you are going to place me. But above all, I'm Pakistani, as like you. Sadiqullah Sahab requested me that please teach them. This is MPhil. Remember, once your course matter comes to the academic council, I'm a member of the academic council as well. So there was a hot discussion on the Doctor of Optometry and BS Vision Sciences, you see. Professor Dawood strongly resisted against using the word doctor, and I strongly promoted the word, and mostly all of them were against using the word doctor. And then a committee was framed because of my strong resistance. At that time, the director was Nasser Saeed, yes, Dr. Nasser Saeed, and he met me in person, and your other fellows as well. But it's not the matter that your other fellows met me or Nasser Saeed Saab, because he was the then director. The point is that what is professionalism? So keeping in view the matter of professionalism, so one should believe in professionalism rather than doctorism. So then we decided to go in your favor, not in your favor, but in favor of this profession, because the justification was that in Australia they are using this terminology and one of the position in Pakistan. Nevertheless, perhaps you were struggling with that you do not have your regulatory council, and there are other councils, for example, PMDC and Pharmacy Council and Nursing Councils, but you don't have council, so perhaps that was the reason. But nevertheless, that matter is now over, I think so, and because it's already approved by the Academic Council of the Harvard Medical University. So this was a history to support you people. Now we are going to, are you listening me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's good. So drugs used in ophthalmology, you see, but for that, let me understand the general concepts. What are the general concepts that how you are going to use the drugs? But you should understand a few basic principles as well. For example, some basic facts about the human eye. Let me remove this icon from the slide. It's a sensory organ that gather electromagnetic energy. You see, rhodopsin is there. There are 3 cones in retina, and you are quite familiar with that, which helps in absorption of blue eyes. This is the basic principles that if an absorbing species is there, light absorbing species is there, and light comes at a particular wavelength, then that is going to excite that, and that knock out the electron from the lower energy level to a higher energy level. And once electrons are being reached at the higher energy levels, so that energy being gained, once if released, what you can say, can be released at once or can be released in steps. So there is another terminology which is not the domain of your specialty, but to tell you, and that is called as phosphorescence and fluorescence. Phosphorescence and fluorescence. And there's a mild difference. So once you go your home today, you just Google what is the difference between phosphorescence and fluorescence. Which one is going to release the energy in step, and in which one the energy is abruptly released. But nevertheless, the energy being taken
that is going that has uptaken the electron up to the high energy level, and then once they are coming back to the lower energy level, so they are going to release that energy. So when light enters the eyes, the rhodopsin is a photosensitive pigment that absorbs light at particular wavelength, that is 500 nanometer, and the energy is converted into electrochemical signals and reaches the brain via optic nerve. This is a general narrative, but it's not so simple. You see, if the energy is not of enough amplitude, remember, if the energy is not of enough amplitude, then the optic nerve is not going to excite. Remember, this is very important. Have you been through the process of depolarization, repolarization? Shahbaz, कोई जवाब दे दे जो CR है या GR है, girl representative. Do you know what is depolarization and what is repolarization? Yes, sir. So what is depolarization, Shahbaz? सर जो कोई मसला नहीं, आप बोले। सर जो हमारे नर्वस सिस्टम है सर, तो उसमें एक खास एनर्जी पोटेंशियल होता है सर, तो उसको जो है जो एनर्जी उसको मिल जाती है सर, उसको फिर हम कहते हैं सर जो सोडियम और पोटेशियम पंप्स होते हैं ना, तो उसके जो है ना एक्सचेंज हो जाता है तो पंप्स के थ्रू, तो उसमें जो है ना मतलब जो हमारे पास एनाइंस और कीटाइंस है उसकी सैचुरेशन जो है कम ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन कहते हैं सर। ये आपने एफएससी में पढ़ा था या मैट्रिक में या 20 विजन साइंसेस में? ये आपने एफएससी में पढ़ा था या 20 विजन साइंसेस में? शाबाश सर, दोनों में पढ़ा है सर। दैट्स गुड। लेकिन आप लोगों का मैं अगर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन पे चला गया तो फिर जो है हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कि ये उस लेक्चर के डोमेन से नहीं। तो आप मेरे एक यूट्यूब चैनल है जिसमें यू कैन फाइंड मी एट प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अली लेक्चर्स on YouTube channel. You see, there is a what you can say. Let me draw it for you. That is a professor. You can say. प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अली, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो करूंगा, और इसमें डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन पे मेरा एक लेक्चर मौजूद है, आज वो जरूर देख ले ताकि आप लोगों का बेसिक आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए अबाउट डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। 2 लेक्चर्स हैं, दोनों देखने हैं। रिमेंबर, उसका फायदा ये हुआ कि आपको जो बेसिक्स है वो आपको समझ आ जाएगी। सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स। ये सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? काइंडली आप रिकॉर्डिंग मैं आपसे पावर पॉइंट शेयर कर लूंगा, डोंट वरी। नहीं सर, ये जो लेक्चर है ना, जो बातें हो रही है सर, तो अगर ये रिकॉर्ड हो तो बेहतर होगा। अगर आपकी तरफ से नहीं हो रहा है तो सर मुझे अलाउ कर दे, मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर दूंगा, आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी सर, मुझे अलाउ कर दे सर, फिर मैं यहाँ से तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे तो आप फिर रिकॉर्ड कर लें। चलो मैं वो कर रहा हूँ, ये अपना क्या है रिकॉर्ड मैंने कर लिया, रिकॉर्ड मैंने यू आर नाउ यस। So you can find me there at Professor Dr. Niaz Ali Lectures on YouTube, and there you can find what you can say depolarization, repolarization, and hyperpolarization. And this is very important, especially not only in medicine, but it's elsewhere important in optometry as well. So what happened when light falls? You see, and that light once fall, so it gives energy, excitation energy, and when that is released, so what is important to understand is that every nerve has its resting membrane potential. Let me clear this one, and I'll take the marker, and let me take the marker. Yes. So there is a concept, as you refer to. This is, for example, a nerve, and this is the dendroid, and this is the axonal terminals,
and once the axonal terminals are there, so there are vesicles, and for example, this is a synapse gap, this is synapse gap between this axonal terminal and this is effector organ. This may be eye, this may be heart, as the case may be. And if this is heart, you see, you can find beta 1 receptors, and if this is the other side, you see, so you can find different receptors. Adrenergic receptor, alpha 1 receptor may be there. But remember, this is the synapse. Here is the norepinephrine release. This is adrenergic nerve. This is adrenergic nerve. Adrenergic nerve mean that sympathetic division of the autonomic nervous system is being innervating this particular organ. Adrenergic. We will talk about the nervous system, and you can find this lecture as well on my YouTube. So important to understand is that synapse is there, and this may be cholinergic as well. If it is cholinergic, so here instead of norepinephrine, there will be acetylcholine. So cholinergic nerve and adrenergic nerve. This is very important, especially in ophthalmology. Once you will be using norepinephrine and as a pupil dilatory agent, and you will be using what you can say to paralyze certain particular region, and you may take the support of atropine and homoatropine drugs in ophthalmology. So what I was in fact going to tell you, when this nerve is at rest, not working any function, so there is a potential difference between the exterior and the interior. Exterior mean bahir or interior, and if we put a voltmeter here, so you will see a deflection on this voltmeter. So it means that there is a potential difference when even this nerve is at rest, and this is called as resting membrane potential. And once you give energy to that, then this nerve can be excited. So every person has its own what you can say resting membrane potential. Every person has its own threshold. Threshold mean reaching that particular point, then the nerve will be excited or fired. So this is very important. And you may remember, outside there is sodium, potassium, and even chloride ion are there. And interiorly, inside, you can say there is sodium ion, but sodium ion internal concentration is less as compared to the external. So when a stimuli are coming, and they will then lead to the influx of sodium, and this influx of sodium will lead to flow of current. Remember, there should be a potential difference once the nerve is at rest, or even if the heart is at rest, or even if it is a muscle, the muscle is at rest. So every organ must have its resting membrane potential, and if it is not having a resting membrane potential, it means that the tissue is no more alive tissue, it is dead. And what happened in electric shock, once a wire is there, so the current become unidirectional. So there is an earth, your foot give you support of earth, and your hand, if you have touched the wire, you have been you come across accidentally with an electric shock. So that current become a unidirectional current, and if you are stuck here with an electric shock and your foot are here, so it will come get this whole current, and from the intracellular or extracellular, this difference of the electrolyte is finished, and then resting membrane potential is no longer there, and then the man is dead. So but nevertheless, this is very important. So what is important in ophthalmology? The resting membrane potential affect particular nerve, and then there are different scores that you perform, whether the nerve is damaged, if it is damaged, how much it is damaged, and you take the support of different what you can say different equipments. But you cannot become master in all these with all these points
simultaneously. Consequently, all the information once reach the brain, so it gives as an outcome, as a vision, and as a vision scientist, you are quite familiar with that. You see, this is the power of the light, uh, and 10 raised to the power, its value, exponential values. And in case of ultraviolet rays and then infrared rays and this is the white light you see, and as we talked about that 500 nanometers, so it's going to absorb the rhodopsin, and then when a man is colorblind, so I leave it on you because बात दूसरी तरफ चली जाएगी. So absorption is maximum, absorption maxima, that is with white visible light you see, and that happens with rhodopsin. So regarding pathology, if a person is deficient of rhodopsin, what will be the let's score? If a nerve is damaged, what will be the situation? And if the other anatomical changes are there, pathological changes are there, then what will be the situation? As we proceed, the situation will be clear. Remember, 30% of the eye front surface is जी वो असद को अलाउ कर दें सर क्लास में, एक्सेप्ट कर दें. as my accept कर लिया जी. So 30% of the eye front surface is exposed, that permits the topical administration. Remember, 30% of the eye front surface is exposed, that permits. आपके syllabus में topic है that is general principles. So today we are going to teach you general principle regarding the ocular pharmacology. Internally, the eye is divided into two chambers, and you are quite familiar with that, the anterior and the posterior chambers. And these spaces are separated by, time is running out. So these spaces are separated by crystalline lens, and the interior chamber, that is front of the eye, has aqueous humor, and the posterior have vitreous humor. You are surgically like, and you are quite familiar with that. And this is a structure you see. Remember, the conventional pathway is if this is the lens, you can find this lens, and remember, this is the fibers that's going to support it, how the lens is suspended, and then the iris is there. You see, iris is there, and this particular muscles are there, and this is the iris. You see, and what you can Sir, say. we can't see anything. You can't see anything? Okay. No, sir. Do you see something now? Do you see something now? No, sir. आपको कुछ नजर सबको नजर नहीं आ रहा? No, sir. किसी को भी नजर नहीं आ रहा सर. सिर्फ आपकी सर वो पिक्चर आ रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा. How it happens? अच्छा, ये हमने रिकॉर्डिंग की है तो इसमें इसका टाइम रनिंग आउट हो जाता है. तो मैं काम करता हूं कि आप लोगों को मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूं, ठीक है जी, और मैं आपको एक लिंक दोबारा भेज देता हूं. समझ में आई बात? हेलो, और रिकॉर्डिंग जो है हेलो जी सर. if you let me stop this recording. Stop this recording because it's a recording pause. Yes. कुछ नजर आ रहा है कि नहीं? क्या भी नहीं? नहीं सर. आप भी नहीं? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें सर. मैं अभी डिस्कॉर्ड कर देता हूँ. स्क्रीन तो मैंने शेयर किया हुआ था यार. ये दोबारा इसका मेरे ख्याल में टाइम नजर आ रहे हैं? जी सर. जी सर, आप नजर आ रहे हैं. ठीक है. तो पहले आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था? नो सर, कुछ भी नजर नहीं आया. यार बिगिनिंग से नजर नहीं आया? नो सर, कुछ भी नजर नहीं आया. अभी फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं. This is चलिए. It happened sometime. I should have asked about that.
अब नजर आ रहे हैं? Yes, sir. Let me stop this. जो मैं pause देता हूँ वो बंद हो जाए. Yes. So as we talked about that there is sensory organs, you see, and we talked about rhodopsin, and we said that a particular wavelength, especially this, what you can say. Let me take the marker. This particular wavelength, 500 nanometer rhodopsin, is a photosensitive pigment that absorbs light. And remember, nerve has its own resting membrane potential, like every particular tissue. Like if it is nerve, if it is a heart, if it is a muscle, and there is a potential difference when the nerve is at rest. If this is nerve, you see. नजर कुछ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Abhi aa raha hai. So, and this is the effector organ. So there is alpha 1 receptors, and there may be beta receptors, beta 1 receptor, and this is the nerve endings. This is a gap, and this gap is called as synapse. You see. So when the nerve is at rest, this is called as resting membrane potential. And if the heart is at rest, then it is called as the resting membrane potential of the heart. And if this is the SNO of the heart, and then the Purkinje fibers and tissues, so then when that is at rest, you see this will be called as the resting membrane potential of the conductive tissue of the heart. Or if it is a muscles, you see what you can say. If it is a muscle, and when the muscle is at rest, then there is a potential difference between the outside and the inside. You see, and once you place an electrode here, and then at the surface, and there is a voltmeter, so you will find it there is a millivolt current is there, and that is called as resting membrane potential. And if this resting membrane potential finishes, so it means life is finished. So if what I can give you an example of a man, you see, and that man is if touching an electric wire here, so it's a positive, and what is going to touch an electric wire here. So what happens? And this particular foot become the negative. That's the earth. So that current become unidirectional. So there is a difference between the internal and the external environment. You see the extracellular and intracellular, and all these differences now the current becomes unidirectional. You see, and what happens? So the difference between the external and the internal, whether that is a muscle tissue or that is a heart or that is a nerve tissue, that has been finished. And once that is vanished or finished, then that is called an electric shock, and the person or the tissue die, the man is dead. So regarding vision sciences, you may come across with a problem in the nerve damages. You may come across with the rhodopsin problem, and you may come across with others muscular problem as well, or epithelial changes or retinal changes. So nevertheless, that will be a separate story. But you see, as we referred to, on 500 nanometer rhodopsin gets the particular light and absorb that. So 30% of the eye in front of surface is exposed, and that permits topical administration of drugs. And remember, eye is divided into two chambers. That is, the front of the eye is, you can say, that's the aqueous humor content, and the posterior have the vitreous humor, which is a jelly-like. So you are quite familiar with that. I'm not going to spare time because on Zoom, there's a particular two people are waiting. Admit all. Okay. So this is what you can say a section, and this is the lens. You are quite familiar with that. And once this is the lens. Lens is here, and it is suspended to particular this fibers, or you can see it, and then the iris is there, and trabecular meshwork, and you are quite familiar with that. And if we are going to make it what you can say a diagrammatic view, so the external one is the cornea. You see, this is the cornea. And what is important to understand, there is a canal of Schlemm,
And if that canal of Schlemm is open and the pressure is going to rise, record as open angle glaucoma. And when you give certain drugs, and they are ligaments which have suspended this particular lens. So if you give drugs and paralyze these muscles and ligaments, so the lens will no longer maintain its position. So it's come here, as you can see in the right way. And what happens? What happens? It's going to there's a pressure of the iris and this canal of Schlemm. So what is in the slide? You see, there is a circulation. This circulation that happens in this conventional pathway, and that there's a general circulation here, and that is blocked. Then it will be called as narrow angle glaucoma, and you have studied that. But then we will come to know that which particular drug is being used for narrow angle glaucoma, which is used for open angle glaucoma. I will share with you these slides on WhatsApp group. Don't worry. Regarding circulation, this is a technical slide. The lens, the cornea, and the trabecular meshwork, you see, which is the principal drain of the eye. Trabecular meshwork is the principal drain of the eye, helped in receiving the nutrients and remove the metabolic waste elimination by the flow of aqueous humor, as there is no direct circulation. Aqueous is formed in ciliary process. Remember, this is a technical point to remember. You are quite familiar with that. And the epithelial cells of the inner non-pigmented region layer are the principal tissues of aqueous humor production. So they are synthesized in these epithelial cells.
can see aqueous humor and the aqueous is formed in the ciliary process, and we discussed that. So there is a secretion production diffuse phenomena. You see there is a secretion which production and that diffuse phenomena. Aqueous then flow into the interior chamber through the pupil, nourishing the lens and what you can say the cornea and the iris. You have studied that in your what you can say in your B sciences. This is, but remember what is important in this slide. This is we have magnified of the previous. We have magnified the previous. What you can say the previous slide has been magnified, and once the previous slide has been magnified, that's a portion. So you can find that this is a circulation, you see, and then this is sinus of this side. So what is important to understand is that the site of action of what you can say of an outflow for the meiotic agent. Meiotic agent mean that people is being affected. Meiosis and mydriasis, you see, meiotic mean the people is constructed, and then prostaglandins drugs are there. There are certain analogs in ophthalmology. We will discuss that in the next lectures, but this is just general understanding. So this particular site is site of action for this particular type of drug like prostaglandins and its analogs. And then the flow of aqueous humor, you can find it, and the flow of aqueous humor is there on the side of action of inflow agent, beta blockers, alpha and carbonic anhydrase inhibitors, and beta blocker like timolol, and carbonic anhydrase inhibitors like acetazolamide, which is present in the mercury dimox, that is you can find. So different drugs have their different set of actions. Aqueous drains to the interior chamber angles with which contains trabecular meshwork and the ciliary body phase. This is what this relates to the previous slides. 80 to 90% of the aqueous flow is through the trabecular meshwork. That is called as conventional pathway, and 10 to 20% of the fluid is through the ciliary body phase or alternate pathway, or what you can say. You said so. Important is this point because this point is very valid in a wash effect. What is wash effect? Try to understand this. If the patient is being prescribed more than one topical medications, usually sometimes the physician gives, ophthalmologist give antibiotics and some painkillers, analgesics like NSAIDs, and what the common people do this mistake. That they use one drug, then they use the second drug, and then use the third drug, and they are usually containing polyethylene glycol or suspending agent. So if you put one drug over the other and then give sufficient time, so what will happen? So try to understand. This is a very basic point in the pharmacology of ophthalmology for drug topical preparation. If a patient is being prescribed more than one topical medication, instruct him how to separate the two doses by at least 5 to 6 minutes. 5 to 6 minutes. Otherwise, the second drop will wash out the medication of the first one. For example, these are technical points. 30-second interval wash out is with the 45% loss of drug of the previous. And if you give this the second drop at 2-minute interval, then there is 17% loss of the first drug. And if you give this at 5 minutes interval, then there is no wash effect. लिहाजा ये wash effect बहुत जरूरी है, especially अगर आप ophthalmology में मुख्तलिफ किस्म के drugs जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं. So let me carry you to some example. For example, corneal concentration of 1% prednisolone phosphate is followed by second drop of antibiotic, as we refer to. So what happens? So if you give the second drops, the second medication, at least 2 drops. So what happens? The prednisolone alone, once you give, so the corneal concentration is 8.96 microgram per gram. And if you give it 30 seconds, so if you give it immediately after 30 seconds of the first dose being given,
methylprednisolone, and then you give the antibiotic dose like chlorpheniramine or any other drugs. So what happened? The second drop or the second medication will wash out the first one. So what happened? Then the concentration from 8.96 it falls to 3.98 microgram per gram. It is more than 50% drop, and then the first drug will not give you the pharmacological action. And if you give the second, what you can say, at 60 seconds, then the concentration is 5.9 microgram. So it's more than 50% of 8.96 microgram per gram. And if you give it at 120 seconds, so the concentration is 6.85. So what is the message in this slide? At least you have to give at a different dosing interval of 5 to 6 minutes. And if you do not maintain this 5 to 6 minutes interval, then the second medication will wash out the first one, and you will not get the response of the first one. This is a technical point. Hello? 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 Are you listening to me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. I'm sorry for obstruction that happens in the previous slide में जो हमने अभी प्रेजेंटेशन की, ये आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपको पढ़ने की आप इसको मैग्नीफाई करोगे, लेकिन ये आपके लिए इस स्टेज पे नहीं है. ये इस स्टेज पे इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये है this is medical management of what you can say ग्लाकोमा का इंक्रीज इन इंट्राक्यूलर प्रेशर का है. और आपने फिर क्या, ये पूरा एल्गोरिथम मैंने दिया है, किताब से मैंने लिया है, अप्लाइड थेराप्यूटिक्स है ये. तो जब आप पूरा फार्माकोलॉजी लेक्चर्स पढ़ोगे उसके बाद आपने इन स्लाइड्स को पढ़ना है. ज़हन में बात याद रखें. समझ में आई बात कि नहीं? तो ये वाला जो स्लाइड है, ये वाला आपने उस वक्त पढ़ना है जिस वक्त हम ये मैं आपको आज भेज दूंगा, जिस वक्त हम पूरा फार्माकोलॉजी आपको पढ़ाएं. तो ये स्लाइड आपने और ये वाला, इसमें मुख्तलिफ अद्वियात है, उसका डोज है, कंसंट्रेशन है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये सारा सब कुछ इसमें दिया गया है. ये मैंने उससे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. तो you have to read this once we finish the whole pharmacology lectures. So आज के लेक्चर के हवाले से जो स्टैंडर्ड बात थी, जो एक वॉश आउट इफेक्ट जो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग को समझ आ जाए. अगर 5 से 6 मिनट आप गैप नहीं देते तो फिर वॉश आउट इफेक्ट विल रिमेंबर एन एफिशिएंट डायग्नोसिस एंड एफिशिएंट प्रिस्क्रिप्शन इज देयर. लेकिन एक इंस्ट्रक्शन जो नहीं है मरीज को कि आप 5 से 6 मिनट कम से कम दोनों अद्वियात के दरमियान टाइम रखे, इससे सारा सब कुछ जाया हो गया. पूरा ऑप्टोमेट्रिस्ट ने भी काम कर लिया, डॉक्टर ने भी काम कर लिया, लेबोरेटरी का भी रिपोर्ट आ गया, सारा सब कुछ सही है. सही दवाई भी एडवाइस हो गई, लेकिन दवाई गलत तरीके से इस्तेमाल हो गई और आप फिर देखते हैं फिर आपको मरीज को रिस्पॉन्स नहीं मिलता. सो दिस इज मैसेज ऑफ द डे, व्हाट इज वॉश आउट इफेक्ट इन ऑप्थेल्मोलॉजी. आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, इसलिए कि टाइम इज रनिंग शॉर्ट. यस सर, पहले तो पहला यार आप फीस तो ऑफ ले चाहिए जी. आप इतने स्लो बोल रहे हैं यार, क्या कह रहे हैं? इसने नाश्ता नहीं किया सर. ये अगर कोई क्वेश्चन हो शाबाश, आप मुझे अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप में फिर कर ले, ग्रुप में कर ले. एनी अदर क्वेश्चन शाबाश, बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. नेक्स्ट हम गूगल मीट पे लेंगे. हाँ ठीक है जी, ताकि बीच में ये ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. ठीक है सर. ये जो मैं आपसे जी सर, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गई क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बीच में इंटरनेट इशू हुआ तो कट गए ना. तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है कि नहीं? ये मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो सर रिकॉर्ड नहीं हुआ? रिकॉर्ड तो नहीं हुआ. जो अगर उनका इंटरनेट इश्यूज है तो इसमें क्या है भाई, let me recap for them. In ophthalmology, you see, we have talked about that every organ is having its resting membrane potential. अगर ये हार्ट का है, so you can see they have its resting membrane potential. अगर ये नर्व का है, resting membrane potential. आपका ज्यादातर काम ऑप्टिक नर्व से है, ओकुलोमोटर नर्व से है. ठीक है जी, आपके मैं मुख्तसर करता हूँ. और रोडाप्सिन जो है ना, that is the absorbing species at 500 nanometers, and consequently आपका विजन कैसे बनते हैं, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर है. और this is what you have studied. And at 500 nanometers
you see white lights या visible lights या visible spectroscopy जो है ना आपका रोडाप्सिन जो है ना वो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है विजन सेंसेस का। इसमें जो हमने बात की कि 30% ऑफ द फ्रंट का जो आई जो फ्रंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इसके इंटरनली 2 चैम्बर्स है, स्पेशली जो हमने यहाँ पे बात की थी। तो ये जो बिगिनिंग में हमने बात की, ये जो सर्कुलेशन यहाँ पे चल रहा है, यू कैन सी इट, और यहाँ पर कैनाल ऑफ स्लैम भी होता है इफ यू रिकॉल, ठीक है जी। तो कैनाल ऑफ स्लैम्स इज देयर, और अगर ये इसको आप पैरालाइज करें, यहाँ से पैरालिसिस करें, तो ये उल्टा जाके बैठ जाएगा। जब ये जाके बैठ जाएगा तो फिर कैनाल ऑफ स्लैम जो है ना, यहाँ से जो सर्कुलेशन है वो इफेक्ट होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर इंट्राक्यूलर प्रेशर रेज होगा। जब इंट्राक्यूलर प्रेशर रेज होगा तो फिर 2 टर्मिनोलॉजीज है, व्हाट इज अक्यूलर हाइपरटेंशन। आज चले जाओ व्हाट इज अक्यूलर हाइपरटेंशन, आप वो देख ले। और फिर जो है ना ग्लाकोमा किसी के पेट आ जाएगी, ग्लाकोमा। फिर ग्लाकोमा के 2 टाइप्स है, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। तो क्लोज एंगल में ये है कि द प्रॉब्लम इन द कैनाल ऑफ स्लैम्स, उसमें कोई एनाटॉमिकल फिर रिकंस्टिट्यूशन, और फिर जो है ना वो ऑप्थेल्मोलॉजिकल सर्जन जो है ना वो रिकंस्टिट्यूशन करके उसको ट्रीट कर लेते हैं। और जो ओपन एंगल में है फिर जनाब आप ड्रग्स का सहारा ले सकते हैं। तो ये एक और स्लाइड है, एक्सटीरियर इज, ये प्योरली डायग्रामेटिक है। ये कॉर्निया है, और वही बात कैनाल ऑफ स्लैम इज हेयर, ये लेंस है, ये उसके लिए सेंसरी सस्पेंडिकुलर ये जो लेगामेंट्स है। अगर आप कोई ऐसे ड्रग्स दे दें इसको पैरालाइज करे, तो फिर ये जब ये पैरालाइज यहाँ पे पैरालाइज हो गए तो फिर ये इस लेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आइरिस विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द स्क्लेरा कॉर्नियल, एंड व्हाट हैपेंस, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। और जब यहाँ पे प्रेशर कैसे पड़ेगा, तो सर्कुलेशन जो यहाँ पे हो रही थी, जो हमने यहाँ पे बात की, ये जो सर्कुलेशन है यहाँ पे हो रही है, ये फिर नहीं होगा। और जब नहीं होगी या स्लो होगी, अगेन इंट्राक्यूलर प्रेशर विल बी रेज्ड। तो और फिर हमने जनरल बात की कि व्हाट इज ट्रेबिकुलर मेशवर क्या है, और कौन से वॉश आउट इफेक्ट की हमने बात की इसमें। ये पिछले वाले डायग्राम का जो है ना, ये ऐसा है कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स कौन से जो है ना, कौन से ड्रग जो है वो व्हाट यू कैन से साइट ऑफ एक्शन है फॉर आउटफ्लो एजेंट्स। आउटफ्लो एजेंट में जो है ना मेयोटिक्स है और प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये इनसिक्योर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और जो साइट ऑफ एक्शन फॉर इनफ्लो एजेंट्स है, ये जो पूरा सर्कुलेशन चल रहा है, तो ये आउटफ्लो है और इनफ्लो जो है। तो इनफ्लो के लिए जो है फिर बीटा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर्स है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है। दिस इज हाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट। हेलो, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पूरी बात की है। हमने लास्ट लेक्चर में सॉरी पूरे जो प्रीवियस सेशन में हमने बात की, जो बीच में लाइन ड्रॉप हो गई, आइंदा हम उस पर बात करेंगे। ये तो ये जनरल प्रिंसिपल जो है आप जरा इनका ख्याल रखें कि वॉश आउट इफेक्ट जो है 5 से 6 मिनट वो बहुत जरूरी है। तो आज का लेक्चर तो जनरल था, एज ए रूल ऑफ टर्म। इससे आप क्या अहस करते हो, साइट ऑफ एक्शन फॉर आउटफ्लो एजेंट क्या है, साइट ऑफ एक्शन फॉर इनफ्लो एजेंट क्या है, ठीक है जी। इसका सर्कुलेशन आपने विजन साइंसेज में पढ़ा है। और फिर ओपन एंगल ग्लाकोमा, नैरो एंगल ग्लाकोमा, जरा अपना नॉलेज को रिफ्रेश करें। और साथ साथ जो है वॉश आउट इफेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है। तो कौन से ड्रग्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपने एक ड्रग इस्तेमाल किया। वॉश आउट इफेक्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 20 विजन साइंसेज में ना, या डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री में। यस सर। तो बस ठीक है, ये तो जनरल प्रिंसिपल है फार्माकोलॉजी में, ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड। अब जब हम आपको नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो फिर हर एक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन आपको बताएंगे, उसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसके सब कुछ हम आपको डिटेल में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है जी। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? आप बताएं कब कर ले लें, आप बताएं। सर मॉर्निंग में ठीक है। मॉर्निंग में किस वक्त? सर जो आपके लिए सूटेबल है मॉर्निंग में। सर कल हमारी एक और क्लास है 10 बजे सर। 11 से 12 बजे मैंने सदीकुल्लाह साहब से टाइम फिक्स किया हुआ है ना, 11 से 12 बजे। ठीक है सर। तो रोजाना ले ले, माँ सिवाय इतवार के रोजाना ले ले, ताकि 8-10 लेक्चर खत्म हो जाए। वैसे तो 5-6 लेक्चर है, लेकिन रोजाना ले ले। ठीक है सर, जैसा आपने। यस सर।
Yes, sir. तो फिर मैं आपको गूगल मीट के जरिए भेजूंगा, ठीक है जी। जूम ऐप हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आप बीच में यूट्यूब पे जा सकते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अली, जो मैं आपसे अभी लिख रहा हूँ, और इसमें लेक्चर्स है, लेक्चर्स। इसमें आपको लेक्चर्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको लेक्चर ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, ठीक है जी। उसमें आपने डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन जरा पढ़ ले, उसमें स्टेरॉइड्स के बारे में लेक्चर है, वो जरा पढ़ ले, वो भी देख, ठीक। हेलो सर, अगर आपका लेक्चर 11:30 बजे हो सकता है, क्योंकि 11 बजे तक हमारी एक और लेक्चर है, तो थोड़ा बीच में ब्रेक मिल जाएगा। चलो 11 ले लेंगे बस, ठीक है। मुझे तो कोई मसला नहीं है, 11:30 से हम लेंगे। और इतवार को नहीं होगा, फिर मैं कल भी ले लूंगा, ठीक है जी। ठीक है सर। तो आज जाए जरा प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ लेक्चर ऑन यूट्यूब, उस पर जरा देखें। आपको कुछ जनरल उसमें मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर है। उर्दू में जो है ना, वो जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और अंग्रेजी में जो रिकॉर्ड है, स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो स्टूडेंट्स के लिए, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी और नर्सिंग के लिए है, ठीक है जी। ओके जी।